है दौड़। यहाँ अपनी मेहनत काम आती है, खुद को सबसे आगे रखने की धुन और दौड़। साल 1900 में जहाँ नॉर्मन पत्रीचाट ने 2 रजत पदक उड़ा लाए थे, उसी साल 1936 में आजादी से पहले हिटलर ने देखा एक जादूगर को जिसका ध्यान चंद पलों के लिए भी हॉकी से हटता नहीं था। देखकर बड़ा खुश हुआ और जर्मनी की नागरिकता और अपने फौज में फील्ड मार्शल की पेशकश कर दी। मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे देश को आगे बढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है। जय हिंद। जिंदाबाद मीरा साहब। फिर आई रफ्तार का दूसरा नाम, भाग मिल्खा भाग। बिजली की फुर्ती, बिजली की फुर्ती हवा से बातें करता हुआ उड़ता पंजाब। ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देंगी, ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम बर्पा करो। इस आवाज से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर, पैरा ओलंपिक विजेता। जिंदाबाद। शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मंजिल मिल जाती है कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। एक और एक जब 2 नहीं होते 11 बन जाते हैं, तो हमारी जबान पर बस एक ही नाम आता है, खुदा इनकी जोड़ी को सलामत रखे। लिएंडर पेस और महेश भूपति। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कर नाम तो कर्नम मलेश्वरी तुझे दुनिया याद करेगी, सलाम करेगी। अगर एक भी बच्चा ये समझता है, ये मानता है कि कोई सपना इतना बड़ा नहीं कि उसके पीछे न जाया जाए, तो मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। हमें डेंगू मलेरिया से फीवर नहीं होता है, हाँ, मगर क्रिकेट का बुखार जरूर आता है। कपिल दा जवाब नहीं। आइए क्रिकेट के 2 सुरमाओं को आवाज देता हूं। सचिन सचिन सचिन, धोनी धोनी, सचिन सचिन, धोनी धोनी। If people throw stones towards you, turn it into the milestones. Hayla. We are on national duty. Everything else can wait. वाह रवि साहब वाह। रुस्तम जमा, तुम हो कहां? आइए सुशील कुमार। अब हो गई कुश्ती काफी, अब होगी दंगल। मेरा निशाना खाली नहीं जाता, मेरा निशाना खाली नहीं जाता। ये तो बस अभिनव बिंदा।
अब तक आपने इतिहास देखा, अब मैं आवाज देना चाहूंगा अपने साथी दानिश को, जो खेल की दशा और दिशा पर रोशनी डालेगा। Thank you, Tanveer sir. With this, we saw a historical account of how India and Indians did at various sporting platforms across the world. Let's delve into the details of Indian sports and how the three strong pillars or prongs of government push, corporate support, and individual drive have got us to the place where we are at. We've built world-class infrastructure. On the slide, you see namely some of our biggest infrastructure monuments, places in sporting arena. In 2011, we built a 5-kilometer racing track with a cost of $900 million called the Buddh International Circuit. The Narendra Modi Stadium, with a seating capacity of 132,000 spectators, remains the largest sporting arena for cricket globally. Also, we see Netaji Subhash National Institute of Sports, established in Patiala in 1964, which remains the leading government institute for training Olympians for the country. It is even called the Mecca for sporting in India for athletics. Other than these, the individual drive is certainly not absent from the scene. And individuals who were attached to sports, like Khulana Gopichand, have established specialty training academies, like the Gopichand Academy in Hyderabad. Then we have Abhinit Bindra training centers for shooting across India in multiple cities: Mohali, Delhi, Bangalore, Bhubaneswar, and Pune. The Usha School of Athletics in Kozhikode is training racetrack athletes. These are the leading academies across India which have trained athletes. Now, if you talk about the government schemes that have been promoting sports in India, the Khelo India initiative, launched in 2016, aims to increase mass participation of youth in annual sporting competitions. It encourages talent identification, grassroots development of skills and infrastructure, and is sponsored by the Ministry of Youth and Sports. Target Olympic Podium scheme also supports elite athletes with financial supports to compete in these events. The Fit India movement, while not exclusively focused on sports, is a general campaign on encouraging youths to adopt a healthy lifestyle and participate in sports. Sports Authority of India remains the premium organization to fund these activities and establish national centers for excellence across the globe. The story is complete without corporate role in sports. With a total CSR funding of 350,000, they have established centers across India. The Inspire Institute of Sports in Bellary, located in Karnataka, which was established by JSW for a cost of 100 crores, continues to train athletes in wrestling, boxing, judo, and athletics. JP Group built the Buddh International Circuit. MRF Pace Academy is a leading center for hunt of talent in fast-paced bowlers, and the initiative is spearheaded by the none other than Dennis Lilly from Australia. The Olympic Gold Quest again is a non-profit organization where a lot of CSRs pump in their money to look for talent that can help us secure the next gold at Olympics. With these three prongs, we've delivered the results so far, and I would say we've made definitive progress. We've got the right direction and a certain increase in budgetary allocations, both from CSR activities, because still out of the 24,000 crores spent in India on CSR by leading corporates, a minuscule amount of 350 goes to sporting only, and there is certainly room for increase. And with a higher allocation of budgets from the government, we will definitely have larger and bigger victories in the year to come. Jai Hind. Thank you.